हेलो एंड व्हाट्स अप, मेरा नाम है zEexsta। आज हम खेल रहे हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी का एक दूसरा पार्ट। गेम होते आ रहा है ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ, जो मुझे आई डोंट नो, आई थिंक आई एम फीलिंग अपसेट राइट नाउ। मुझे गेम ख़त्म नहीं होना है यार। गेम ये बहुत ही बढ़िया है एक्चुअली, दैट इज़ द रीज़न आई एम फीलिंग सो। आई अंडरस्टैंड क्या है बोल के, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ गेम्स टू कवर. But whatsoever it is, this game has been, I think, the best game for me so far in the year 2023. This game is rocking actually. Alright, I think we have more videos to come on the same game, so let's not waste a lot of time talking about the same game here. तो चलो फिर वीडियो अभी चालू करते हैं. एयर एंड वाइस, इसमें हमें क्या जा रहा है कि मीट पॉपी स्वेरिंग को हमें मिलना चाहिए. It is the area to the far north of Hogwarts. Not really sure about it. वो हम चेक करेंगे. पर उससे पहले ना यहाँ पे एक आ गया इंटरेस्टिंग सबमिशन, एंड दैट इज सेबेस्टियन स्टोरी. ओके, यहाँ पे कह रहा है कि स्पीक विद सेबेस्टियन द अंडरक्रॉफ्ट. तो हम पहले ये करेंगे एंड देन वी विल हेड टुवर्ड्स आवर मेन स्टोरी. शिट, ये एंटर करने का क्या तरीका है? नाइस. मेरे कॉस्ट्यूम देख रहे हो, एकदम पूरा का पूरा चेंज कर लिया मैंने. ये पता नहीं कुछ चैलेंजेस करने से अनलॉक होता है ये वाला आउटफिट. बट एनीवेज इसको थोड़ी देर रखेंगे. You'll never believe what I've learned. ओके, क्या पढ़ लिया भाई? What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Okay, I regret using Crucio. No, I agree, we did what we had to. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it. Because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot.
ओके बस इतना सा था क्या ये मिशन या फिर आई डोंट नो। हाँ मेरे को लग रहा है बस इतना ही था, इसके आगे कुछ नहीं है अभी बात करने को। आई थिंक फॉर नाउ द क्वेश्चन राइट देयर। ऑलराइट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो एक काम करते हैं हम फायर एंड वाइस चालू कर देते हैं मिशन अपना। हमें मिलना है पॉपी स्वीटिंग से। किधर है? शी इज़ क्वाइट फार। ओके यहाँ पे पॉपी स्वीटिंग। सो देन आई थिंक हम एक काम करते हैं, ये वाला यहाँ पे फास्ट ट्रैवल करेंगे, फिर इसको अनलॉक करते हुए जाएंगे पॉपी स्वीटिंग के पास। ओके अच्छा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। आई थिंक सुबह में, आई थिंक मॉर्निंग इज व्हेन द मिशन इज गोना स्टार्ट। Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Okay, your secret's safe with me. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Okay, we're supposed to follow popping. Sorry, popping कह रहा हूँ, poppy. All right, poppy sweeting. ये है ना नाम इसका। यार ये कॉस्ट्यूम मेरा कितना फनी सा लग रहा है मिशन करने जब आ रहा हूँ तो इसको पहन के। A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Okay, ये एक थोड़ा सा वार्निंग था इनसे। He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. मुझे पता नहीं है कहाँ लेके जा। ओह शिट, ये क्या है? That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. अच्छा तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है सर्च फॉर साइंस ऑफ पोचर्स। अच्छा आई थिंक वी आर इन एन इन्वेस्टिगेशन एरिया। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। चलो फिर चालू करते हैं इन्वेस्टिगेशन। Pelts. Poor beasts. ओके ये हो गया। Still smoking. They can't have been gone long. Yes, that's right. Revelio.
और क्या है? हाँ यहाँ पे कुछ है. Why wouldn't they take their cages with them when they left? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. गॉब्लिन मेटल. ओके, वो मेरे को पता नहीं क्या है. यहाँ पे एक क्रेट है, इसको हम कर लेते हैं ओपन. क्या मिला? कुछ बढ़िया नहीं. पॉपी से बात करते हैं. मेरे को याद है. ओह शिट, ये क्या है? हाँ ओके, रहने दो. मेरे को याद है ये वाला मिशन ना, इन्होंने अर्ली एक्सेस गेम रिलीज होने से पहले जिनको दिया था खेलने के लिए. आई थिंक दिस वाज द मिशन दे गेव अस टू प्ले. Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. ओके, दोबारा पॉपी को फॉलो करना पड़ेगा. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. So I think we have to approach poachers, but I think एक काम करते हैं, इन वो इनविजिबिलिटी का जो चार्म है उसको इक्विप कर लेते हैं. What I wouldn't give to be a demigod. I didn't always like a polite. Then I think we can do it quietly, I guess. Bayondale's not half as tough as it sounds. Shit, मेरे को लग रहा है ये वाला पार्ट ना हम पार नहीं कर पाएंगे. क्वाइटली नहीं हो पाएगा. हाँ, अभी जब ये जा रहा है उस तरफ तब मुझे जाना पड़ेगा. बट cloudy, like, you know, it might rain. What? You'll regret this one day, you will, when you're struck by lightning you never saw coming. In future, I shall just keep my wisdom to myself. oh shit, that was too close. What in Merlin's name? Are those dragons? भाई मेरा कैरेक्टर कितना फनी सा लग रहा है. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. ओके, हॉन्टेल हॉल जो है इसको हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. बट वी शुड नॉट गेट कॉट. ऐसा मिशन का ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, बट या आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू. एक काम करते हैं, इसको ना राइट में बुलाते हैं यहाँ पे. इसको जाने दो राइट में. Don't know what Victor was thinking straight the previous totalis. हाँ जी. जितना स्नीकी हो सके ना उतना स्नीकी मुझे रहना पड़ेगा. Revelio.
अच्छा नीचे 2 गॉब्लिन्स Have हैं. you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me. चलो भाई दोनों को कर दिया ख़त्म हमने एक साथ ही. मज़ा आ गया. ओके देयर इज अनदर वन हियर. इसको भी आराम से उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आई गेस. यस इसको भी कर दिया हमने ख़त्म. और वैसे तो यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे कलेक्ट करने के लिए. ये क्या है? ना कुछ नहीं. अच्छा नीचे कुछ नहीं है कलेक्ट करने के लिए, हमें जाना पड़ेगा ऊपर. बस मैं आई एम वरीड कि मैं विजिबल ना हो जाऊँ. ओके आई कैन क्लाइम इनविजिबल. ओके दैट इज़ नाइस. यहाँ पे एक सैक है, इसको ढूंढ लेते हैं. शिट ब्रो ड्रैगन्स है यहाँ पे एक्चुअली, देख रहे हो. इसको रहने देते हैं अभी के लिए. लेट्स गो इन्वेस्टिगेट द एरिया. भाई आगे बहुत बंदे हैं, आगे बहुत बंदे हैं अगर मैप में आप देख रहे हो तो. Nice it was. Sparkled like. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? ओ भाई मेरे को लग रहा है ये ड्रैगन को हम खोलने वाले हैं अभी. शिट ये तो क्रेजी होने वाला है. ओके उससे पहले देख लेते यहाँ पे कुछ है तो नहीं. नहीं कुछ नहीं है. ओके लेट्स ओपन अप. यहाँ पे थोड़ी चीज़ें हैं. They've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. That Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. ओके ड्रैगन एग तो है यहाँ पे. आई थिंक पॉपी को वो दे देते हैं. चेक करते हैं क्या सीन है यहाँ पे. पता नहीं ये दौड़ नहीं रहा है, चल रहा है कैरेक्टर मेरा. ओके अभी दौड़ रहा है. ऑलराइट इसको कर लेते हैं कलेक्ट. ओ अनलॉक. अनलॉक करना पड़ेगा, तुरंत ही कर लेते हैं अनलॉक. यस अनलॉक हो गया सक्सेसफुली. और ये ड्रैगन का अंडा हमारा बेटे. उठा ले उठा ले. भाई अंडे से अंगार निकल रही है, देखा आपने. All right, I have ओके वी हैव द ड्रैगन एग नाउ. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. क्या करूँ, इनविजिबल होके जाऊँ या फिर डायरेक्ट अप्रोच कर दूँ. अच्छा एक काम करते हैं, पहले थोड़ा क्वाइट रहते हैं. क्या पता अगर एक दो बंदों को हम उठा पाए क्वाइटली. Ricky little cape flapper. Shall we finish what we started? You're the one we're looking for, and you brought a friend. ओह शिट इतने बंदे आ गए. Shall
ओह शिट, थोड़ा मिसकैलकुलेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। What have you done? Let me out, Doug. Seriously, what am I on? Descender. You will fall! Bombarda. Defender. Let me out, Doug. Back for more. Near I'll find you. Descender. Glaciers. Let me out, Doug. Won't get away with that. Bombarda. Descender. Glaciers. Descender. Stupid. Descender. We don't have time. We need to free her now before more. Free the dragon, भाई ये क्या फाइट था यार, मजा आ गया। Accio. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. शिट, और बंदा आ गया। ओह शिट, ये क्या हो रहा है? This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Okay. See you back in the castle. इसका मतलब मिशन हो गया कंप्लीट। भाई क्या मज़ा आया यार ये वाला मिशन। It was actually too good. ड्रैगन को बचाया हमने। अभी तक गेम में ना एक्चुअली हमें दे हैवंट इंट्रोड्यूस्ड अस टू ड्रैगन्स आई गेस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस मेनू में ना लेफ्ट हैंड साइड में वो एक सिंबल लिखा है ड्रैगन जैसा। आई एम नॉट रियली श्योर ये ड्रैगन है कि क्या है। राइट में हमारा ब्रूम है, अब जो है हमारा वो है फ्लाइट, राइट। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये सिंबल किस लिए आई एम नॉट रियली श्योर। इट्स गोइंग टू बी आवर पेट और वॉट एवर इट इज। It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. हाँ जी, मेरे को लग रहा है एक ही लेटर था।
और हाँ, हमें ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल सिखाने की बात कर रही थी प्रोफेसर वीसली, तो वो हम सीख लेंगे, नॉट टू वरी। अभी क्या सीन है? व्हाट क्वेस्ट डू वी हैव अवेलेबल? प्रोफेसर वीसलीज असाइनमेंट इज़ आउट हियर। आई थिंक दिस इज़ असाइनमेंट नंबर, पता नहीं, यहाँ पे नंबर नहीं दिखा रहा है। ओके, वो जो भी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल हमें सीखने को मिलेगा अगर हम ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट कर देते हैं तो। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट फ्रॉम आवर मेन ऑब्जेक्टिव। अगर ऊपर आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीट प्रोफेसर वीसलीज असाइनमेंट बोल के लिखा है। आई थिंक दिस कुड बी अ रिक्वायरमेंट टू आवर मेन ऑब्जेक्टिव। आई थिंक दैट्स वाई। तो एनीवेज हमें ऐसे भी वैसे भी करना ही है, इसको हम कर लेंगे। तो ये वाला क्या है? मीट नैरी इन द लोअर हॉक्सफील्ड। आई एम नॉट श्योर नैरी से मिल के हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बस रिक्वायरमेंट दिखा रहा है। ओके, हम एक काम करते हैं, प्रोफेसर वीसली का जो असाइनमेंट है ना, कलेक्ट द फील्ड्स गाइड पेजेस इन अंडरग्राउंड। लाइब्रेरी से हमें लाइब्रेरी से एक फील्ड गाइड कलेक्ट करना है। तो एक काम करते हैं, हम तुरंत ही चले जाते हैं लाइब्रेरी पे और वहाँ से ना देखेंगे कि कौन सा फील्ड गाइड है जो हमें कलेक्ट करना चाहिए। ओके, हम आ गए लाइब्रेरी पे। यहाँ पे हमें दिखा रहा है कलेक्ट द फील्ड गाइड पेज इन दी अंडरग्राउंड हार्बर। ओके, लाइब्रेरी में अंडरग्राउंड जो है हमें पता है, हम पहले भी गए हुए हैं यहाँ वहाँ पे। तो आई थिंक दिस इज़ द राउट। यहाँ से जाना पड़ेगा ना? नहीं यार, मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैप मेरा कुछ और दिखा रहा है। एक काम करते हैं, ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे दिखा रहा है ना वो वाला रास्ता फॉलो करेंगे। कहाँ पे भाई? चल, लेके चल मेरे को। Perhaps the book Professor Weasley wants me to get is upstairs. Upstairs? Okay. अच्छा, ऊपर है। शिट, एक मिनट, लाइब्रेरी में नीचे भी है और ऊपर कुछ और भी है ना? यस, आई थिंक लाइब्रेरी वाला हम सही कर रहे थे। नीचे एक था, उसको कलेक्ट करके ऊपर जाना था, बट आई थिंक वी आर गोइंग डायरेक्टली ऊपर। पर कोई दिक्कत नहीं जी, हम ऊपर इसको कलेक्ट कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जाएंगे दोबारा लाइब्रेरी का कलेक्ट करने के लिए। हाँ, अंडरग्राउंड हार्बर। ओके, हम इससे पहले यहाँ पे गए हैं? आई डोंट रिमेंबर कि हम यहाँ पे गए इससे पहले। आई एम नॉट रियली श्योर, या फिर या दूसरा एंट्रेंस हो उस जगह के लिए। आई एम नॉट रियली श्योर, जाएंगे तभी पता चलेगा। So this is the underground harbor. अरे ना जी ना, पहले नहीं आए हम यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द अंडरग्राउंड हार्बर। ओके, Revelio. यहाँ पे कहीं पे ना एक फील्ड गाइड पेज है। यस, यहाँ पे है। चलो, ये हो गया अंडरग्राउंड हार्बर का फील्ड गाइड पेज, ये हमने कर लिया कलेक्ट। और यहाँ पे ना वो वाला चेस्ट है। यस, आई थिंक इट इज़ अ चेस्ट, व्हाट आई थिंक इट इज़। तो हम इनविजिबल होके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, यहाँ पे एक बुक या फिर फील्ड गाइड पेज है which we are unaware of or which we missed. That book Professor Weasley asked me to. Looking for the book Intermediate ये कौन है? Transfiguration. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. ओके, इफ़ आई मस्ट। अरे यार, मुझे करना ही नहीं था ये, बट एनीवेज मुझे लगता है हमें करना ही पड़ेगा। If that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The Golden Snidget. Correct! The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? The Pepper Up potion. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions.
The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Horcruxes. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consist of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? अरे यार मेरे को ये सब पता नहीं है यार, ये क्यों पूछ रही है मैं से ये सब? The quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice Potion allows the drinker to change species. False. Correct. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. मुझे नहीं करना है यार, not now. निकलते हैं यहाँ से. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. चलो, हमें मिल गए सारे वो गाइड पेजेस These tasks are complete. I should attend Transfiguration. जो हमें चाहिए थे. अभी चलते हैं प्रोफेसर के पास और सीखते हैं नया वाला स्पेल. स्पेल का नाम था ट्रांसफिगरेशन स्पेल. आई थिंक दैट स्पेल चेंजेस थिंग्स. ऐसा कुछ सीन है, आई एम नॉट रियली श्योर. पर हाँ, मेरे को लग रहा है प्रोफेसर वीजली का क्लास बहुत ही करीब में, यहाँ से 74 मीटर्स दिखा रहा है. Can we meet at the 3 broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. ओके, डायरेक्टली स्पेल आ गई हमारे हाथ में, को कर लेते हैं, सीख लेते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल. Beautifully done. ऑलराइट, स्पेल हो गया अनलॉक सक्सेसफुली. अब एक काम करते हैं, उसको इक्विप कर लेते हैं. कहाँ पे? यहाँ पे. यस, स्पेल हो गया अनलॉक. बात करते हैं प्रोफेसर से पहले. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumours of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? शिट, ये मुझे क्यों पूछ रही है वो? यस, नो यार, हम प्रोफेसर फिग को इससे बाहर रखेंगे. Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs.
I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Thank you very much, Professor. All right. Oh, चलो इसको रख दिया इन्होंने यहाँ पे, ये रेडी है। ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल इस्तेमाल करने का टाइम आ गया। ओह शिट, डिब्बे में ट्रांसफर हो गया है तो। Oh my god, okay. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Okay. दो ईमेल्स या फिर आउल्स आ गए हमारे पास, और दो जो हैं मेन मिशन के हैं। सेबेस्टियन का आ गया आउल, दैट इज़ क्रेजी। आई वाज वेटिंग फॉर सेबेस्टियंस आउट। तो फिर सेबेस्टियन का जो स्टोरी है, नेक्स्ट लाइन, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, दो मेन मिशंस आ गए हमारे पास। एक हो गया द शैडो ऑफ द माइन, मीट सेबेस्टियन बाय द ओवरलुक। सेबेस्टियन का मेन मिशन हो गया अभी, तब से साइड मिशन था, अभी ये मेन हो गया। ओके, दैट इज़ नाइस। टॉक टू पॉपी बोल रहा है। ओके, दिस इज अगेन अबाउट द ड्रैगन जिसको हमने बचाया था। नैडी का मेरे को अभी तक सीन पता नहीं है, हम चेक करेंगे। ये टॉक टू पॉपी बोल रहा है, मेरे को पता है ये ड्रैगन का सीन है, इसको हम चेक करेंगे। पर सबसे एक्साइटिंग मेरे को यहाँ पे मिशन लग रहा है सेबेस्टियन का हम करेंगे तुरंत ही। पर एक बार कर लेते ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन। इसको दोबारा डिब्बा बना दिया और डिब्बे को तोड़ दिया। ऑलराइट, तो ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन गाइज। अगले वीडियो में हम मिलेंगे सेबेस्टियन का मिशन करते हुए, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और जाने से पहले मैं अपना ना वो लुक चेंज ही कर देता हूँ यार, इतना वो दिख रहा है ना, घटिया दिख रहा है ना मिशन के वक्त, और वो सब मेरे को पता नहीं इसको रखूँ या ना रखूँ। ये वाला है, आई थिंक यस, दिस आउटफिट गोज ऑसम। ये है हमारा फाइनल आउटफिट। तो फिर चलो ये वाला मिशन मैं इधर ही एंड करता हूँ। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ ग्रेट वन। चलो फिर, पीस आउट।